Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Sheetal here. We all know we get stretch marks when our body actually rapidly lose weight or gain weight or during pregnancy. And we get a stretch marks on our hands, our thighs or our buttock, as well as the main area is our tummy, especially during pregnancy, because your tummy become like so big, so that's why you get a lot of stretch marks on your tummy area. But are they harmful? Not at all. It doesn't hurt in any way. Stretch mark is not a health issue, neither it indicate any underlying health problem, but somehow you feel that the skin is not so good, your skin should be flawless, and if you don't like to have that, then you should do something about it. Getting rid of it makes you feel good about your skin, so feel good, be happy. So I'm gonna give you some amazing tips for not only padding these stretch marks, for preventing them from happening as well. Especially if you are just pregnant, then you can do this method to make sure you are not getting any stretch marks. Now, if you are pregnant, make sure you are asking your doctor before using any remedy. You can use these remedies after pregnancy, or you have a stretch mark, or you are not pregnant. So let's start the video. For the first remedy, all you need is vitamin E capsule and aloe vera gel. अगर आप नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक कंटेनर लीजिए और उसमें एलोवेरा जेल लीजिए और उसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल मिला दीजिए। विटामिन ई इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टर। दिस जेल एक्चुअली गोज डीप इनटू योर स्किन एंड रिपेयर योर स्किन। ये आपके स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करेगा एंड एट द सेम टाइम ये आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स जो हैं उन्हें भी ब्लॉक करने से बचाएगा। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो एक्चुअली आपकी एजिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए ही ये जेल आपके फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक होने से बचाएगा ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा यूथफुल दिखे। दिस जेल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेच मार्क्स एंड डार्कनेस टू। रब दिस जेल wherever you have stretch marks. Rub it until this gel is fully absorbed by your skin. You can apply this 2 times in a day. You can keep it in fridge for good 1 week. Within 8 weeks, you will see your stretch marks are fading away. For the second remedy, आपको चाहिए होगा शुगर। ये रहा। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा लेमन। ये रहा। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है हनी। टेक 1 spoon of raw sugar. Now I am going to add 1 spoon of honey, and now I am adding 2 to 3 drops of lemon juice in it. Sugar is great for exfoliating. The small crystal gently scrub away dead skin and leave you feeling smoother. It makes the skin soft and supple. Sugar is a wonderful ingredient that can help with the stretch marks removal naturally. Now come to the lemon. Lemon are very rich in vitamin C and citric acid that exfoliate the skin to peel off the dead cells and lighten the stretch marks. Lemon juice is one of the best natural remedy to clear stretch marks. If you are troubled by any kind of marks or dark spot, then honey is the best remedy. हनी में हाई लेवल की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्किन में अगर कोई घाव भी है तो उन्हें ठीक करने में यह हमारी हेल्प करता है, और साथ ही ये हमारे स्किन सेल की ग्रोथ को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए ही स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी ये बेस्ट रेमेडीज़ में से एक है। तो अब बारी आती है हमारी थर्ड रेमेडी की। उसके लिए हमें चाहिए होगा रॉ शुगर और कोकोनट ऑयल। हम लेंगे 1 चम्मच रॉ शुगर और हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का। इसे अच्छे से मिक्स करके हम हमारा शुगर स्क्रब रेडी कर लेंगे। Sugar's granule mildly exfoliate the dead skin cells found over stretch marks to create blood circulation, which heals to broken cells. Sugar attracts moisture from the environment, making it a hydrating and gentle scrub. Coconut oil seeps deep into the skin, hydrating it and reducing healing time for stretch marks as well. Coconut oil is very moisturizing and increasing the elasticity of skin by straightening it. Scrub this onto your stretch marks in circular motion and leave it on for 10 to 15 minutes. Rinse off with warm water and try doing this at least twice a week.
So that's it for today's video. If you are enjoyed it, then please don't forget to give this video a big thumbs up and hit the subscribe button. I'll see you in my next video. Till then, stay tuned. Take care. Bye.